Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Country's core sector grows at 3.1% in the month of November 2021. At the stock market, the Sensex surges by 460 points, Nifty jumps 150 points, Rupee appreciates by 8 paise against the US dollar, and GST Council to hold GST rates on textiles to 5%. The rate issue to be sent to Rate Rationalization Committee. देश में इस वर्ष नवंबर में कोर सेक्टर में 3.1% की वृद्धि हुई। घरेलू शेयर बाजार में लिवाली तेज, सेंसेक्स 460 अंक कुचला, निफ्टी 150 अंक ऊपर आया। रुपए में $1 की तुलना में हुई 8 पैसे की मजबूती, और जीएसटी परिषद ने कपड़े पर जीएसटी की दर में फिलहाल नहीं किया कोई बदलाव। 5% कर बरकरार, कर बढ़ाने का मुद्दा टैक्स रेट रैशनलाइजेशन कमेटी को भेजा जाएगा। In our top story, the 8 industry core sector grew by 3.1% in November year-on-year, according to the data by the Union Ministry of Commerce and Industry. It was up 7.5% in October 2021. The 8 core industries comprise over 40% of the weight of items included in the index of industrial production. During April to October this fiscal, the sector's output rose by 15.1% as compared to a contraction of 12.6% in the same period of the previous year. According to the data, coal production rose by 8.2%, natural gas by 23.7%, refinery products 4.3%, fertilizers by 2.5%, steel by 0.8%, and electricity by 1.5% in the month of November. देश में 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में नवंबर महीने में इस वर्ष 3.1% की वृद्धि हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष नवंबर महीने में खासतौर से सबसे अधिक वृद्धि गैस उत्पादन के क्षेत्र, प्राकृतिक गैस उत्पादन के क्षेत्र में देखने को मिली है। हालांकि अक्टूबर महीने में औद्योग कोर सेक्टर का विकास 7.5% की दर से हुआ था। हमारे साथ इस खबर पर चर्चा के लिए आमंत्रित हैं ऑनलाइन वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पुनीत जैन। पुनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पुनीत जी, कोर सेक्टर के जो आंकड़े आए हैं उसमें हालांकि अक्टूबर की तुलना में हम थोड़ी सी कमी देख रहे हैं, लेकिन जो वार्षिक आधार पर इसमें 3.1% की वृद्धि हुई है, उसे किन अर्थों में आंकना चाहेंगे आप? तो मनोज जी, जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं इसमें करीब 8 जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें अलग अलग इंडस्ट्रीज में हम ग्रोथ देख रहे हैं। और यदि हम उसके एनालिसिस करें तो उसमें हम देखते हैं कि जो कोल, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, कोल है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं, या जो मेटल सेक्टर है, यहाँ पर हमने अच्छी इंक्रीज देखी है। और कुछ सेक्टर्स हैं जैसे सीमेंट है, वहां पर गिरावट आई है। कुछ और पेट्रोल जिसमें क्रूड ऑयल जैसे है वहां पर गिरावट देखी है, तो वहां पर कुछ हमने गिरावट देखी है। कुल मिलाकर ये कहूंगा कि जो आंकड़े हैं वो इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रोग्रेस को दर्शाते हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है उसमें अभी और स्कोप है आगे ग्रोथ का, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो मुझे लगता है आंकड़े अच्छे हैं, लेकिन आने वाले समय में इसमें और बेहतरी हम देखेंगे। Puneet, it appears that, with coal production going up by 8.2%, natural gas by 23.7%, it appears to be a response to a shortage, especially in coal production that we had witnessed earlier. Do you see that the supply chain disruptions earlier have been resolved because of these supply increases? Certainly, there was in fact a scare, as you remember, a few months back on coal supply, and of course, worldwide we have seen that coal supply has fallen a lot, and there was a shortfall in power production also. So, post that, government started stepping up increase in coal production, and we have seen Coal India increase supplies to power plants, to industries, and now there is no shortage. So, yes, to that extent, it is all I think a very timely response to that need
for higher output of energy products. And similarly, like you mentioned, natural gas production has gone up. So I think this was required to push industrial growth further. That step has been taken. However, I must say that when we look at these numbers, these are year-on-year numbers. That is, we are comparing these numbers with what was happening in November last year. And November last year was not very good, actually. We had seen a decline of 1.1% in core industries production. So these are not even times, no? So October we had a big growth of more than 14% in core industries. In November we have 3% growth. But overall, I would say this is a trend which shows growth rather than difficulties in the supply chain. It still appears to be coal-centric, the IIP data for the month of November, because you have direct correlation to thermal power plants, which is generating electricity, which went up by 1.5%. Steel manufacture of it, you use coke instead of coal, which is actually a derivative of the same. It has a carbon content. So everything appears to be centric around coal production. Why is that? So largely, if you see the last few months, when the economy has been going through what is called a reopening trade. So it is consumption of goods which has really gone up. And there was also a very big shortfall in global supply chains for basic materials. For example, we know that steel exports from China have fallen very sharply, and China used to contribute more than 50% of the global steel production. So clearly, there have been many disruptions in global supply chains, and manufacturing industry is trying to make up for that shortfall. And that is why, if you see, the economic growth is more centered on manufacturing of basic materials rather than services right now. पुनीत जी, यदि हम आंकड़ों को देखें तो अप्रैल से लेकर अक्टूबर के दौरान चालू वित्त वर्ष में 15.1% की वृद्धि हुई। क्या इसे हम संतोषजनक माने, और जो वर्तमान ताजा हालात हैं उसे देखते हुए जो अगले 4-5 महीने रहेंगे उसमें हम क्या आकलन कर सकते हैं कोर सेक्टर की वृद्धि रहने के? मनोज जी, मेरा अपना अनुमान है कि आने वाले समय में हम जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सेक्टर्स हैं, अभी तक जो ज्यादातर हमने इकोनॉमिक ग्रोथ देखी है भारतीय अर्थव्यवस्था में, वो सर्विसेज लेड रही है। पिछले कई वर्षों की बात कर रहा हूं मैं। पिछले यदि हम 5, 7, 10 वर्षों की देखें तो सर्विसेज ने बहुत ज्यादा ग्रोथ करी थी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सेक्टर था, वो उतना ग्रो नहीं करता था। मुझे लगता है वो कुछ हद तक वो शिफ्ट हुआ है, और फिलहाल सर्विसेज उतना ग्रो नहीं कर रही हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम अच्छी पकड़ देख रहे हैं, अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं। और मेरा अनुमान यह है कि आने वाले 3, 4, 5 वर्षों में हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं। Very briefly, your take on fertilizers going up by 2.5%. Again, a direct linkage to agro production and to avoid inflation of food and drink articles. That is true, and also interestingly, government has been able to restart many fertilizer plants which are lying closed for many years, in fact for many decades, and which is remarkable because we were importing a lot of fertilizer in the last many years, and while our domestic plants, many of them were shut. Recently, some old plants have been restarted, I think, and we are seeing that being reflected in the numbers now with this production going up. श्रोताओं, यहाँ पर हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे कार्यक्रम लेकर मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अवसर बीत जाए। अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आके चले जाएंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए। बड़े छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। वर्ष 2021 के आखिरी कारोबारी सत्र में आज कुल मिलाकर घरेलू शेयर बाजार में रौनक बरकरार रही। खासतौर से छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा। घरेलू शेयर बाजार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 460 अंक यानी 0.8% की बढ़ोतरी के साथ 58,254 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 150 अंक यानी 0.9% बढ़कर 17,354 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में बेहतर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 1.4% की वृद्धि हुई। स्मॉल कैप इंडेक्स
1.2% बढ़त के साथ बंद हुआ। At the stock markets, the Sensex at the BSE surged 460 points, 0.8% to end at 58,254 today. Nifty at the NSE jumped 150 points, 0.9% to 17,354. In the broader market, the BSE mid-cap index climbed 1.4% and the small-cap index advanced 1.2%. The market breadth on the BSE was strong with nearly 3 advances for every single gainer. Sectorally, on the BSE, all the indices ended higher with the metal index leading the pack, jumping 2.1%. Consumer durables index climbed 2%. Basic materials index advanced 1.9%. Auto and telecom added 1.7% each. Consumer discretionary index rose 1.5%. BankX gained 1.4%. Finance, FMCG and realty index climbed 1.3% each. Oil and gas index moved up 1.2%. Industrial index added 0.9%. Healthcare index advanced 0.8% and the utilities index ended 0.5% higher. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 8 पैसे मजबूत हुआ, 74 रुपए 33 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। पुनीत जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे, खास तौर से वर्ष 2021 की 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक की तिथि का यदि आकलन करें तो बाजार का कुल प्रदर्शन कैसा आंक रहे आप? तो मनोज जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष रहा 2021 का, क्योंकि 2020 में काफी चैलेंजेस देखे थे हमने। तो कुल मिलाकर मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत एक लैंडमार्क ईयर है भारतीय स्टॉक मार्केट्स के लिए। पहली बात तो ये कि एशिया में हमारा शेयर मार्केट के बेस्ट परफॉर्मेंस रही। इंडियन स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस पूरे एशिया में बेस्ट रही और दुनिया की जो सबसे बड़ी मार्केट्स हैं हम उसमें सेकंड बेस्ट रहे। बेस्ट परफॉर्मेंस रहा जब फ्रांस की मार्केट का, वहां पर करीब 30% ग्रोथ रही इंडेक्स में, और हमारे भारत में करीब 23 से 24% की ग्रोथ रही। इसके बाद अमेरिका में और जर्मनी और इंग्लैंड के मार्केट्स बेहतर थी, लेकिन वी वर द सेकंड बेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। ये एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है, एक लैंडमार्क एक रहा भारतीय बाजारों के लिए। दूसरा जो 3 पॉइंट मैं कहना चाहूंगा इसमें, दूसरा मेन पॉइंट है वो ये है कि जो ये साल था, ये आईपीओ के लिए, नए जो शेयर आते हैं उसके लिए लैंडमार्क था ये, क्योंकि इसमें 1,20,000 करोड़ रुपए के आईपीओ पूरे साल में आए हैं। सबका प्रदर्शन करीब सभी का अच्छा रहा है और इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे उनकी बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन रही। बल्कि मैं ये कहूंगा कि एफआईआईज का जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत कम था। इस वर्ष उन्होंने केवल 20,000 करोड़ रुपए निवेश किया, जबकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने करीब 1 लाख करोड़ रुपया से ऊपर की निवेश करा डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में, और करीब 3 करोड़ नए डीमैट अकाउंट्स इस साल खुले। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि एफआईआईज के मुकाबले डोमेस्टिक इन्वेस्टर का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, हमारी ओवरऑल मार्केट बहुत अच्छी रही, और साथ में यदि आप देखें तो अगर विश्व के से कंपैरिजन करें तो बहुत अच्छा। जो बेस्ट सेक्टर रहे वो पावर सेक्टर में और रियल्टी सेक्टर में 50 से 60% की ग्रोथ रही, वो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स थे। और जो सबसे खराब परफॉर्मेंस थी उसमें भी कुछ ग्रोथ थी, गिरावट नहीं थी, लेकिन एफएमसीजी और बैंक और हेल्थ केयर ये 10% करीबी बढ़त आई, इतनी ज्यादा इस साल ग्रोथ नहीं आई। तो कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि ये पूरा प्रदर्शन बाजार बहुत अच्छा रहा आपके बाय इन्वेस्टर्स के लिए। Puneet, I would also like to add 2 points, and maybe you can give your views on that. You spoke about the FIIs investing in our markets. They were net sellers, at least for the last 2 months. But today, on the 31st of December, there were net buyers along with DIIs. The DIIs are, of course, net buyers by a substantial margin. Is that going to change in the new year when the market opens on Monday? And secondly, Reliance shares weightage on the Sensex and Nifty has had a very strong role to play. They went up by 20% for the entire year. So how do you see both these factors playing as far as the valuation of the Sensex and Nifty is concerned? So Arjun, first issue and the bigger issue really is the FII's potential behavior in this market in next new year. While right now they are not very active because of the holidays which are going on in overseas countries. However, I think next year they will continue to be to play a low-key role, largely because of the tapering by US Fed, which means withdrawal of liquidity. So my own expectation is that at least for the next 6 months or so, we will continue to rely on retail investors for liquidity and strength in the domestic markets.
And FIIs may not play a very major role. They may continue to be sellers, or at least they will sit on the sidelines. And mostly it is domestic investors show. Secondly, I think you raised the point about Reliance. Yes, it is the largest weighted stock in the index. In fact, there's been a rebalancing today in Nifty, and the weightage for Reliance has gone up further because of its outperformance vis-a-vis other stocks. So I think it continues to be a very important company as far as India is concerned and the markets are concerned. And my expectation is that going forward, it will continue to grow. The returns next year may not be as high as this year because already we've seen a lot of price increase, but we might see modest gains in the coming year. श्रोताओं, कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं पुनीत जी बता रहे हैं कि दुनिया में दूसरे नंबर पर हम रहे प्रदर्शन की दृष्टि से। पूरी दुनिया में हमारा प्रदर्शन काफी बेहतर रहा। बहुत बड़ी तादाद में नए डीमैट अकाउंट खुले और जो हमारे घरेलू निवेशक हैं उनकी ओर से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश भारतीय पूंजी बाजार में हुआ है। यहां पर पुनीत जी समझना ये है कि भारत में जो नीतियां लागू हुई उनमें से कौन से प्रमुख कारक रहे जिनके कारण शेयर बाजार के प्रति, यानी अपने धन पर बेहतर निवेश का क्या माध्यम अब भारतीय पूंजी बाजार, शेयर बाजार बन चुका है या बनने वाला है, जहां अन्य जो बचत के साधन हो सकते हैं उनकी तुलना में यहां निवेश करना जो आम हमारे कह लें छोटे निवेशक, खुदरा निवेशक हैं उनको लग रहा, और ये आने वाले दिनों में पूरी की पूरी धारणा या पूरा का पूरा जो डायनामिक्स है शेयर बाजार का वो बदलेगा? मनोज जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि हम यूजुअली वी गेट कैरिड अवे कि कितना पैसा निवेश हुआ या कितना इंडेक्स बढ़ा, लेकिन उसके जो कारक हैं, जो मेन कारण है जिससे कॉन्फिडेंस आता है इन्वेस्टर्स में, उसकी तरफ हम ध्यान कम देते हैं। और आपने ये पॉलिसी पे जो इश्यूज को इसमें उजागर किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि इस पिछले वर्ष और इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी स्टेप्स ऐसे उठाए जिससे कि इकोनॉमिक जो एनवायरनमेंट है वो बहुत इंप्रूव हुआ। कई रिफॉर्म्स इकोनॉमिक पॉलिसी में आए हैं, पर्टिकुलर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी नीति रही, साथ में जो गवर्नमेंट ने सिंप्लीफिकेशन किया है, चाहे हम PLI स्कीम की बात करें जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक काफी बल मिला है, चाहे हम GST सेक्टर की बात करें जहां पर बहुत रिफॉर्म्स हुए और वहां टैक्स कलेक्शन बहुत स्ट्रांग है, और स्टेबल टैक्स रिजीम जो एक पहले टैक्सेशन को लेकर बहुत चिंताएं रहती थी, वहां बहुत क्लैरिटी हुई है, बहुत ट्रांसपेरेंसी आई है। मुझे लगता है और आने वाले समय में जो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज फॉलो कर रही है, मुझे लगता है उससे जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो पिछड़ गया था, सर्विसेज में तो हम लोग ग्रो करते थे लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में हम पिछड़े हुए थे, वहां पर आने वाले 3-4 वर्षों में आप देखेंगे कि काफी बड़ा स्टेप अप आएगा, काफी ग्रोथ आएगी। और ये जो नए रिफॉर्म्स हैं और नए निवेशक आ रहे हैं जो भारत में नई फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में हम उसमें काफी बड़ी बदलाव देखेंगे, काफी बड़ी ग्रोथ देखेंगे। Let's have a look at the market just based on what you have said. What has been the F&O expiry yesterday for the month of December series, and how is the January series going to play out in the derivatives market and its impact on the cash market? That should give us an indication of how the Sensex and Nifty should move, at least for the month of January. So, Arvind, yesterday the expiry was actually muted. So, and my own take was that December was a month when there was a lot of volatility in this market. Markets initially rose, then they fell, and so we were expecting the closing to be also very volatile. Fortunately, it was not, and it was quite stable, but it was muted. Today, when the markets reopened, in fact, a lot of global markets were closed today, and India was among the few markets that were open for trade today. We saw very good buying interest. Although, again, not many FIIs were active, but even then we saw good volumes in the market. We saw a good pickup across the sectors. In fact, practically every sector in the index, it moved up. So it kind of tells me that as we approach the budget, because budget will be at the end of January, so markets are hopeful that we will see a very positive budget. We may not see new taxation proposals. And like I mentioned earlier, there will be stability of policy, which encourages investments and encourages industry. So I think market is hopeful that January will be a positive month, and we might see some improvement in indices. And a part of that we really saw today in the markets. श्रोताओं, यहाँ पर हम लेना चाहेंगे फिर से एक बार छोटा सा विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है। अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की
बाजू वाले से भिड़ोगे। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं, अपनी अकल लगाइए। बड़े भैया। अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां मिला जुला रुख रहा। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.6% लाभ में रहा। हांगकांग के हिंगसेंग में 1.2% की वृद्धि हुई। उधर बिकवाली के दबाव में सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.1% नीचे आ गया। जापान और दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार वर्षांत में आखिरी सत्र में आज बंद रहे। अन्य आर्थिक खबरों पर ध्यान दें तो एक विभागीय सर्वेक्षण के अनुसार चीन में दिसंबर में अप्रत्याशित रूप से फैक्ट्री उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिली है। विश्लेषकों के अनुसार लघु अवधि में आर्थिक गतिविधियां बढ़ने के आसार हैं, जबकि नीति निर्माताओं पर प्रोत्साहन उपाय का दबाव बना रहेगा। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार नवंबर में विभागीय विनिर्माण परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स 50.1 पर था, जो दिसंबर में अब तक बढ़कर 50.3 पर पहुंच गया है। यूरोपीय जोन पर ध्यान दें तो अंतर्देशीय कारोबार में प्रमुख शेयर बाजारों में गिरावट का रुख था। लंदन का FTSE 100 0.4% और फ्रांस का CAC 40 0.3% नीचे चल रहे थे। उधर जर्मनी में वर्षांत के आखिरी दिन कारोबार बंद रहा। Moving on to the U.S. stock markets. On Wall Street, key indices ended lower yesterday, retreating late in thin holiday volume from record highs set early in the session on strong U.S. data, including a drop in weekly claims for U.S. unemployment benefits. So the Dow Jones Industrial Average fell 91 points, 0.3% to end at 36,398. The S&P 500 lost 14 points, 0.3% to close at 4,779. And the Nasdaq Composite Index shed 25 points to 15,742. The investors cheered a U.S. Labor Department report that the number of Americans filing for new unemployment claims dropped to a seasonally adjusted 198,000 in the week leading up to Christmas from a revised 206,000 a week earlier. In other strong U.S. data, the Chicago Purchasing Managers Index delivered a print of 63.1, a monthly increase of 1.3 points. With one trading day left, the S&P 500 was set to end the year more than 27% higher, with the Nasdaq up about 23% and the Dow's annual rise just shy of 20%. Each of Wall Street's main indices was poised for a sharpest three-year surge since 1997-1999. Puneet, very briefly, with President Joe Biden at the helm and looking at the factory activity in China for the month of December, the PMI index has risen to 50.3. Similarly, the PMI in the U.S. economy is at 63.1. Do you see the relationships normalize now, the America instead of China plus? It's very difficult. It's a very dynamic situation. And Chinese growth is again coming off very uneven past history of economic growth. So clearly China, and in fact, they had curbed down a lot on the manufacturing industry. So they might be reopening a little bit now. But America, of course, is finding its feet. It's not easy to ramp up production. However, if you look at the employment data which came out of the U.S., it shows that they are again at very comfortable employment numbers. And therefore, it may not be possible for U.S. to ramp up production very rapidly because they will have a shortage of workers beyond a point. So I think it's a very mixed picture right now for U.S. and China. Their relations will, of course, continue to be quite rocky because they're not just economic, they're also political reasons behind them. So my own sense is that China-U.S. story will continue to be up and down going forward. However, I think 2022 will be the year when world trade will get some balance once again, because earlier there have been a lot of challenges to the world trade. But I think 2022 should be a year when we will see some semblance of normalcy return to world trade. आइए आगे बढ़ें। जीएसटी परिषद ने कपड़े पर वस्तु और सेवा कर की दर में कोई वृद्धि नहीं करने का फैसला किया है। इसकी दर 5% बनी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 46वीं बैठक के बाद बताया कि कपड़े पर जीएसटी का मामला टैक्स रेट रैशनलाइजेशन कमेटी को भेजा जाएगा। कमेटी अपनी रिपोर्ट आगामी फरवरी तक प्रस्तुत करेगी। आपकी प्रतिक्रिया हम समझना चाहेंगे। इसे 5% पर फिलहाल रोका गया है, यानी रोका रखा गया है। आगे आने वाले दिनों में क्या आसार होंगे और ये रुकाव जो हुआ उसके पीछे क्या कारण आपको लग रहे हैं?
देखिए, जीएसटी काउंसिल ने पीछे ये एक रिफॉर्म के तरीके से उन्होंने सजेस्ट किया था कि 5% से 12% जीएसटी किया जाए टेक्सटाइल सेक्टर पे। पर टेक्सटाइल देखिए, एक तो बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट है टेक्सटाइल सेक्टर में, कपड़े के बुनने में, बनाने में, आगे जितनी टर्शरी इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है। आफ्टर कंस्ट्रक्शन टेक्सटाइल इज द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो मुझे लगता है कि वहां पर उसका जो नेगेटिव असर आता जीएसटी का, उससे कुछ चिंताएं थी। सेकेंडली, टेक्सटाइल हम बहुत एक्सपोर्ट भी करते हैं इंडिया से, हमारे लिए काफी बड़ा एक क्षेत्र है जो कि जिसमें कि रूरल एम्प्लॉयमेंट भी काफी मिलती है। तो मेरा अपना अनुमान यह है कि ये आसान नहीं होगा जीएसटी बढ़ाना, क्योंकि अब काफी, मैं देख रहा था कि करीब 10-12 स्टेट्स ने इस प्रपोजल को अपोज किया है, और मेरा अपना मानना यह है कि इसमें समय लगेगा, ये आराम से और जल्दी ये इंक्रीज नहीं होगा। Well, let's have a look at the oil market. Global crude oil prices edged down today, but were set to post their biggest annual gain in 12 years, spurred by the global economic recovery from the COVID-19 slump and producer restraint, even as infections surged to record highs around the world. So Brent crude futures fell 3 cents to $79.50 a barrel, but U.S. crude futures shed 10 cents to $76.89 a barrel. Brent is on track to end the year up 53%, while U.S. crude is heading up for a 58% gain, the strongest performance for the two benchmark contracts since 2009, when prices soared more than 70%. What's your take? We're looking at the futures prices here. How are you looking at the spot market very briefly? And what does the new year hold for consumers, especially where governments are looking to increase their revenue by marking up the sale of fuel? So clearly, oil has been a big challenge for the entire economy. In fact, one of the reasons for high inflation in the world economy is energy prices being so high. Hopefully, these prices will stabilize around the current levels. OPEC Plus is going to increase production from January onwards, so that might also bring down prices a little bit. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत पुनीत जी धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद विनोद जी। अंत में सर्राफा बाजार। घरेलू सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की चमक तेज रही है। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का मूल्य 144 रुपए बढ़ा 46,874 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी 664 रुपए उछली 61,015 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोना मजबूती के साथ $1,816 प्रति औंस पर रहा। चांदी अपने पूर्व स्तर $23.15 प्रति औंस पर टिकी रही। And before we close, a reminder of the headlines. The country's core sector grows at 3.1% in November. At the stock market, Sensex surges by 460 points. Nifty jumps 150 points. Rupee appreciates by 8 paise against the US dollar. And GST Council to hold GST rates on textiles to 5%. The rate issue will be sent to Rate Rationalization Committee. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. बड़े भैया, इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनो जग में हो फसाए। सिंपल है छोटे कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हारेंगे। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर आज से ही करिए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Market Mantra brought to you by National Stock Exchange. Market Mantra.